Hello, good morning everyone. So in the previous video, we have discussed about nutrition in organism, different mode of nutrition in organism. So in this video, we will discuss about nutrition in plant. So nutrition in plant is mainly by two modes. First is by root and second is by photosynthesis. So we will look at first about root, how it goes with root. So root, what does root do? Root absorb into important minerals, water, protein, nitrogen compound from soil. So जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रूट मिट्टी से पानी, प्रोटीन, मिनरल्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. ये तो हो गया रूट से. रूट बेसिक रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि वाटर. और फोटोसिंथेसिस का देखते हैं. फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर ये जो वर्ड है फोटो, इसका मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस मीन्स production with the help of light. So now let us study about photosynthesis. So what is photosynthesis? Photosynthesis is the process in which green plant convert simple inorganic material like water, H2O, carbon dioxide, CO2 into complex organic food material C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight. So what does photosynthesis mean? Photosynthesis means the process in which green plant convert simple inorganic material into organic food material in the presence of chlorophyll and sunlight. So now a question arises, what are the raw materials of photosynthesis? So here the raw material of photosynthesis are water and carbon dioxide. Why? Because plant has to search for water and carbon dioxide, as sunlight is available in the atmosphere, whether it should be available in daytime, but it is available for free, and chlorophyll it contains genetically. So plant need to search for water and carbon dioxide. So how does plant take these things? So plant need water, carbon dioxide, sunlight, chlorophyll. So first we will talk about this. So chlorophyll. तो क्लोरोफिल का क्या रोल है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दिस? सो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ. सनलाइट द प्लांट गेट्स फ्रॉम एटमोस्फियर, फ्रॉम द सन. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड द प्लांट टेक इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा. सो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है. कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन इसका इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसको ये कन्वर्ट करता है शुगर में या बोलते तो स्टार्च में. उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल को ये इसका रूट एब्जॉर्ब करता है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रूट भी फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल कलेक्ट करने में मदद करता है. तो रूट क्या करता है? रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है. सो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का बेसिक डिफिनीशन के बारे में. और फोटोसिंथेसिस का फार्मूला लिखना होगा हम लोग को, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो वो भी यही जान लेते हैं. सो फोटोसिंथेसिस में हम लोग देख क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड combines with water molecule in the presence of sunlight and chlorophyll, और मिलकर क्या बनाना है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है. इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया जाए, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है. सो ये हो गया इसका बेसिक केमिकल रिएक्शन. अगर इसको बैलेंस करने की बात आए तो so now this chemical equation is balanced. 12 6 18. Now it is balanced. So here there are 6 carbon, 6 to 12 and 6 18 oxygen, 12 and 18 oxygen, 6 to 12 hydrogen atom is also 12 hydrogen atom. So now this equation is balanced. So green plant produce their food with the help of process of photosynthesis. So they produce food and they utilize food, and the rest food, मतलब कि जो food बच जाता है, and the rest food which left with them they store
in their leaves as starch. Like in our body, after utilization of energy and our food nutrients, so whatever the left food is inside our body is stored in the form of glycogen, and in plants it is stored in the form of starch in the leaves. So now we will look about events occurring during photosynthesis. Means what happens during photosynthesis, what are the steps. So it occurs stepwise. So first, absorption of light energy by chlorophyll. The chlorophyll of green plant absorb light energy from sunlight. Then conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Now the light energy absorbed by the chlorophyll gets converted into chemical energy with the help of chlorophyll, and that chemical energy is used to split water molecule into hydrogen and oxygen separately. So after that, the most important process or event which occur, that is the reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Now carbon dioxide, that is CO2, is reduced to carbohydrate. So in class 9, so in the first chapter of this class 10th in chemistry, what we have studied about reduction, addition of hydrogen or removal of oxygen. Addition of hydrogen or removal of oxygen is called reduction. So let us see how reduction is done here. So here CO2. So here one carbon atom contains 2 oxygen atom. But from here to here, if you will look, 1 carbon atom contains 1 oxygen. So removal of oxygen, तो क्या हो गया, reduction. And now we will also see here hydrogen is also getting added. So from here, this is H2O, and it has been splitted with the help of chemical energy which has been converted by chlorophyll into hydrogen and oxygen. So hydrogen from here is added to carbon dioxide here. So here addition of hydrogen. So addition of hydrogen or removal of oxygen, both are regarded as reduction. So here reduction of carbon dioxide is done to carbohydrate, and the substance is formed is carbohydrate. So after watching the events occurring during photosynthesis, we will now look where this photosynthesis takes place in plant. So photosynthesis takes place in leaf, that we all know. Where in leaf? So all plant cell contain small green pigments called chlorophyll. So contains chlorophyll, and it is present in an organelle that is called chloroplast. So we will first know about chloroplast. What is chloroplast? These are small organelles found in plant cell. It contains chlorophyll which absorbs sunlight for photosynthesis. So what is chloroplast? Chloroplast is a small organelle found in every plant cell which contains chlorophyll which absorb light energy, sunlight from the atmosphere, and convert it into chemical energy which breaks down water molecule. Was the whole leaf like this, and we cutted it from here, and we will study this dissection, this thickness. So now we are looking at the dissection of leaf under a microscope. If you will look under a microscope the dissection of a leaf, you will find similar structure like this. So now let us look on this, have a look on this structure. So the very upper layer of leaf, suppose this is a leaf and its very upper layer, it is called cuticle. It is a waxy layer. Cuticle is a waxy layer. After that there is upper epidermis. Upper epidermis layer, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और भी इसका फंक्शन है. उसके बाद जो मेन होता है अपर एपिडर्मिस के बाद प्लांट सेल. सो दिस प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल. ये वही प्लांट सेल है जो कि क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे प्लांट सेल के बारे में. सो ये जो आप लोग को बड़ा बड़ा दिख रहा है ये वैक्यूल्स है. जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस साइड में होता है. सो दीज आर द न्यूक्लियस and these are the green pigments, that is chlorophyll, which is inside an organ called chloroplast.
सो हेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड दिस ऑर्गेनेल। सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ का डाइसेक्शन भी देख लिया जूम कर कर। अब देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता कहाँ से लीफ में। सो गैसियस एक्सचेंज, सो इसका जो लोअर एपिडर्मिस लेयर होता है इसी में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोर बना हुआ है, ओपनिंग बना हुआ है स्टोमाटा का, और यहाँ पर ये जो दोनों सेल प्रेजेंट है इसे गार्ड सेल बोलते हैं। सो स्टोमाटा के इस सेक्शन को जूम कर कर स्टडी करते हैं। हम लोग देखते हैं स्टोमाटा को जो वहाँ पर हम लोग बनाए थे उसको जूम करके स्टोमाटा होता है क्या, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है। सो व्हाट आर स्टोमाटा? स्टोमाटा आर पोर्स ऑन द लीफ विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमाटा आर द स्मॉल पोर प्रेजेंट in the leaves which help in the exchange of gases like carbon dioxide and oxygen, which is produced, oxygen is produced during the photosynthesis. So this stomata helps in the exchange of gases from leaf to atmosphere. Beside this, beside stomata there are many other structures from which exchange of gases take place. In root also, in stem also. In stem lenticles are there present. If you will see a big plant, a matured plant, and you will see on its bark, suppose this is a plant, और उसका bark पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे ऐसा ऐसा निशान बना हुआ होता है, groups. So from these are called lenticles, and from these lenticles exchange of gases also take place. So now look on this stomata. So each stomata is guarded by two guard cell. So this is a single stomata and it is guarded by two guard cell which regulate the opening and closure of pores. So these guard cell actually do what? This guard cell regulates the opening of a stomata and close, whether the stomata shall open or close. And this opening and closure of a stomata functions or works due to the water content inside the stomata. So water content of the stomata is responsible for their function. So now now let us look very briefly how this work. So this is a stomata and these are guard cells. So basically होता क्या है यहाँ पर, ये guard cell जब प्लांट सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करके इस स्टोमाटा में भेज देता है, और ये जब गार्ड सेल में जब पानी भर जाता है, मतलब कि ये एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, टाइट हो जाता है और ओपन हो जाता है। सो जैसे ही इसमें वाटर कंटेंट हाई होता है ये कर्व हो जाता है और खुल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। और जैसे ही इसमें से वाटर कंटेंट फिर से इवापोरेशन के थ्रू या किसी भी माध्यम से जैसे वाटर कंटेंट यहाँ से निकलता है, सो ये फिर से क्लोज हो जाता है, पानी निकलता है तो सिकुड़ जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर, सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर and it swell and the stomatal port gets opened, and when the water is again get reabsorbed to the plant or is evaporated, or the water content gets low in the stomata, it shrinks and it's get closed. So this is the stomatal pore. And one thing about the stomatal guard cell is a bean shaped. This is called bean shaped. So our kidney is also like this, bean shaped. So guard cell is bean shaped. Okay, so this was the lecture of today. So in the next video we will discuss about the nutrition in human and nutrition in amoeba. And one thing I forgot to tell you that in the process of photosynthesis there is a dark reaction and there is a light reaction. You will study in classes. Only you need to know that there is a dark reaction and there is a light reaction. So both of these comprises photosynthesis process. So till then, goodbye and have a nice biology.